So, very good morning, very good evening, friends. So, let us start with this chapter 8, which is the most important chapter. So, just now we completed chapter 7 and its questions, and now the chapter 8, which is based on the case studies, impact assessment. We have already studied the social impact assessment techniques in chapter 7. So, now chapter 8 is on social impact assessment, the ultimate objective, understanding it through some case studies. And this chapter is of 15 marks. Like earlier chapter, chapter 7 was also of 15 marks. Now chapter 8, social impact assessment case studies. There are, I think, 5 case studies which they have given, and then they have given questions on 2 or 3 case studies. But what we have done, we have bifurcated the entire 16 social audit standards into 4 PPTs that I have already shared in the group: 100 to 400, 500 to 800, 900 to 1200, and 1300 to 1600. So if you go through those social audit standards, you will find a lot of similarity. So that is why we have clubbed it 4 in 1. Now, another thing which I will do now, I will club these social audit standards which are covered in chapter 8, like 500, and then, so there are 4 or 5. So we will cover all these. 1300 is another. So that in one PPT, you can have an overview of all these. So these are 4 or 5, but let us quickly go through these case studies. And these 16 social audit standards, they are based on the Sustainable Development Goals. As we know, Sustainable Development Goals are 17, but 17th is a residuary. So 16 only and 16 social audit standards. So each one for each Sustainable Development Goal. So this is based on SES 5, and this is a case study on draft social audit standard. Ensuring environmental sustainability, addressing climate change, including mitigation and adaptation, forest and wildlife conservation. As we know, our sustainable development goal, if we go through the list of sustainable development goals, so there are 17 sustainable development goals. And one of the sustainable development goal is on this climate change, I think. Climate action. So climate action is one such goal. And here, this is a 500 social audit standard, and social 500 is on ensuring environmental sustainability, addressing climate change, including mitigation and adaptation, forest and wildlife conservation. Because we live in a society, we live in an environment, and definitely we should keep it clean. So this is the social audit standard based on such action. So we have to ensure the environmental sustainability, we have to address the climate change, and we have to mitigate and adapt forest and wildlife conservation. So these are some of the objectives of the social audit standard 500. So AB responsible, so this is the case study. So it's in the form of a story. So we can quickly go through this. So AB responsible services is a social enterprise, NPO, working in Maharashtra with more than 15 years of experience in watershed management program. AB Responsible Services was founded to address the issue of water conservation. As we know, in Maharashtra, the problem of water is acute, and we have been reading in newspapers also that there was a drought in some parts of Maharashtra. So this is an organization, AB Responsible Services, which is an NPO, and it is working in Maharashtra. Of course, these are all hypothetical figures and situations. So AB Responsible Services, it was founded to address the issue of water conservation, soil conservation, and increasing availability of water for irrigation.
So their focus on these issues has demonstrated increasing agricultural productivity, enhancing livelihood, and increasing green cover in their project areas. So their main project sites are in the district of Ratnagiri and Raigad, which faces extreme water shortage in spite of receiving good rainfall. So they have identified the project sites in the districts of Ratnagiri and Raigad, which face extreme water shortage in spite of receiving good rainfall. So being a hilly terrain, the water runoff to the sea is high. Building storage facilities is expensive due to the hilly terrain. AB Responsible Services wants to raise funds to initiate an integrated water management project. Now, this is the idea that they want to initiate an integrated water management project and they want funds for this. And what will they do with these funds? They will increase the water storage capacity and thereby increase the productivity of a wide range of stakeholders. So this integrated water management project aims to conserve fertile soil, reduce and harvest runoff rainwater, recharge groundwater tables, create green belts, increase agricultural productivity, and thus contribute to community development. So these are the advantages they want to reap through this integrated water management project. Activity in this project included construction of check dams, farm ponds, desilting means removing soil from the base, borewell recharge, and installing water pipelines for drinking water for households. The project has been implemented in 18 villages with a population of 25,000 people. So AB Responsible Services has invested a total of this much amount, 45.3 lakhs in this integrated water management project. Now section 1, introduction, objective and scope. So Ratnagiri and Raigad districts in Maharashtra, situated between Western Ghats and the Arabian Sea, receives heavy rainfall during monsoons. Rainfall is a crucial factor affecting agriculture, domestic water supply, hydroelectric power generation, plants and industries. Water resources are highly sensitive to climate change and can pose serious threats to food and environmental security. Understanding the changes in rainfall patterns, inability to store water with the slope of Western Ghats, and inadequate water resources in the region, AB Responsible Services developed the Integrated Watershed Management Project. Now, so they devised this integrated water management program to address the issue of integrated water management in the project sites. So IWMP project was implemented with an objective of increasing agricultural productivity, enhancing livelihood, and increasing green cover in the 18 villages of Ratnagiri and Raigad with a population of over 25,000 local people. Second is the evaluation social impact. Data collection. The stakeholders that have been approached for obtaining data include direct beneficiaries. So direct beneficiaries of this project will be the villagers, farmers, owners of local businesses. Implementing team of AB Responsible Services. Representatives of local government, panchayat members, relevant taluka and district level officers. NGOs operating in these districts on environmental issues. The data collection tools used were key information interviews, focus group discussions, and quantitative surveys. Questionnaires were designed and data collection conducted by AB Responsible Services. Sample was selected from direct beneficiaries, farmers, local business owners, and community from 18 villages of the program. Desk review. A desk review, we know desk review is done in the office while sitting in office. So a desk review of existing documents was conducted to gain further insight into the evaluation procedure and impact assessment. These documents cover companies' policies, values, activities towards environmental conservation. So reports generated under environmental protection laws, annual reports, sustainable development curriculum, feedback form by staff or trainees, photographs of activities carried out, data on improved soil fertility, data on rainfall and availability of water, data on improved agricultural productivity,
details of plans, programs held and to be held in future, water conservation management policy, then inspection and personal interviews. So we did some surveys, we did some desk review, and now the inspection and personal interviews. So besides desk reviews, physical inspection was conducted of check dams, bore wells, farm ponds, and water pipelines to understand the effectiveness of the program. Personal interviews were also conducted with selected stakeholders to understand the social and environmental impact of IWMP. Now, for 20 focus group discussions, 10 KIIs, and 500 quantitative surveys with stakeholders were conducted. So this is inspection and personal interviews. Then evaluation questions. So evaluation questions were also reviewed by the social auditor to assess the responses received from various stakeholders and to understand what has changed. So this helped the social auditor in forming his views on the following aspects. First is the IWMP implementation. So what watershed management activities were carried out in the villages? What water supply related challenges were faced by the village population? Currently, what are the efforts being carried out by the local government for better water availability? What permissions were taken by the government departments to carry out IWMP activities? Now, impact on agriculture. So what is the increase in the area of land that has been irrigated through the watershed development project? How many farmers have been impacted because of the watershed development activities? Have people been able to enhance their standard of living through vegetable gardens and bolster their cultivation? Then has there been an improvement in biomass production? Then impact on health and standard of living. So how many villagers got access to better drinking water supply? Have the incidence of waterborne diseases reduced in the village? How much is the increase in annual income of villagers with enhanced agricultural productivity and improved income from local business? Impact on environment. So has the water quality in the area improved? Has there been an improvement in biomass production? And is there any impact on aqua life? Now, key metrics for evaluation of project or program. The social auditor reviewed the project or program documents to frame the evaluation criteria for assessing impact. So key metrics collated from baseline, midline, and end line assessments were analyzed to effectively understand and evaluate impact. So following aspects are covered with respect to direct beneficiaries. So first is the demography, then financial and social background of the beneficiaries, age, gender, occupation, family income, sources of income, water resources available for domestic, commercial, and industrial use, quality of water supply, amount spent by villagers to get additional water supply. Agriculture, current agricultural practices, land under irrigation, pre and post implementation of IWMP, increase in farm production, increase in agriculture allied activities, increase in income from agriculture. Then commercial activities, change in income, environmental factors, enhanced soil and water quality, improved biodiversity, improved groundwater tables. Now, assessment of evaluation criteria, KIIs, illustrative key impact indicators. So these are the evaluation criteria, quantitative questions. So over 25,000 beneficiaries directly impacted by IWMP, which include farmers, total population in villages, local businesses. Over 1 lakh indirect beneficiaries, IWMP population from neighboring villages. 177 hectares of land brought under irrigation. 76% water availability increased. 45% increase in annual income. 27% decrease in medical expenses. Average 4 watershed management activities carried out in every village. 6,875 households got better drinking water supply. And average 12% increase in farm production. 18% increase in amount of total water resources used. So these are the quantitative criteria. Now, qualitative criteria. Improvement in living conditions with better sanitation facilities. Improved health
conditions with reduction in water pollution and restoration of quality of soil, improved standard of living with increased annual income, per capita of water availability, improved awareness about watershed management practices, availability of new employment opportunities for maintenance of watershed management activities, increase in hydraulic energy generation, increase in awareness on rainwater and stormwater harvesting, changes in soil quality, increase in horticulture practices. Then change in green cover over total surface area, changes in migration pattern with better employment opportunities and living conditions. Now, if they want to frame questions, so they can ask you which of the following is included in qualitative criteria. So qualitative criteria में बोलेगा कि whether per capita water availability is the what type of evaluation criteria is the following per capita water availability. Options are quantitative criteria, qualitative criteria. ऐसा पूछ सकता है, वो पूछेगा जहां पर आपको लगेगा कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे इसमें ऐसा मुझे लगा कि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी में कंफ्यूजन हो सकता है, हम इसको क्वांटिटेटिव सोचेंगे नॉर्मली, बट है ये क्वालिटेटिव. नाउ असेसमेंट ऑफ चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस. So challenges or areas for improvement. So following we will frame questions on this also. So challenges or areas for improvement. So following changes were faced by stakeholders which were identified during primary data collection. Difficulty in understanding the importance and use of watershed management practices. Inability to understand the immediate impact of climate change. Lack of awareness about biodiversity in general. Lack of awareness on maintenance of watershed management activities, underestimation of changes and impact of rainfall and storm. हमें क्या करना है, जब हम पढ़ रहे हैं इसको तो हमें इसको मार्क कर लेना है कि देखो कुछ तो हो गया, हमें लग रहा है कि ठीक है चैलेंजेस है, पर हमें लग रहा है ये वाला पॉइंट कैसे चैलेंज हो गया, तो वी कैन मार्क, उस एरिया को हम मार्क कर सकते हैं. Now, limitations of the assessment. So following are the limitations of the assessment. So there is a non-availability of baseline data on all indicators, especially qualitative indicators. Then overlapping of stakeholders, as farmers are also part of local community. Then respondents' inability to answer few questions, especially on quantitative indicators. So this was the case study. ये case study यहाँ पर complete हो गई हमारी, ठीक है. अब हमारे पास दूसरी case study आ जाती है 200 की. बट बिफोर वी मूव टू 200 वाली केस स्टडी, हम ये देखते हैं कि पीछे क्वेश्चन कौन से इन्होंने दे रखे हैं, कौन सी केस स्टडी इसके अंदर दे रखे हैं. पहला दे दिया इन्होंने अनएम्प्लॉयड और अंडर प्रिविलेज के बारे में, इसके ऊपर एक केस स्टडी दे दी. दूसरी जो केस स्टडी दी इन्होंने वो दी ओरल हाइजीन के ऊपर, ठीक है. तो दो केस स्टडी दे रखी है इन्होंने, एक तो दे रखी है ओरल हाइजीन पर और दूसरी दे रखी है हमारी स्किल डेवलपमेंट पर. अब दूसरी हमारी है ये हेल्थ केयर इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड मेकिंग अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है. और भी देख लेते हैं दूसरी वाली केस स्टडी कौन सी है. ये फिर है प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. ये है प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. और एक केस स्टडी है हमारी स्लम एरिया डेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इंटरवेंशंस. तो ये जो इन्होंने 5 दिए हैं हमारे को केस स्टडीज, और जो बाद में केस स्टडी दी हैं, दोनों में डिफरेंस है, समझ लो. 5 केस स्टडीज तो इन्होंने यहाँ कवर कर ली, और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन दे दिए ये दूसरी कुछ केस स्टडीज पर दे दी. इसमें इन्होंने 2 दे दी, एक इसको ये सैंपल क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं तो हमें एक आइडिया हो गया पहले, ठीक है ना, चाहे कोई भी केस स्टडी हो. अब हम इस केस स्टडी को पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड से शुरू करेंगे,
ठीक है. First of all, our focus will be on the 5 social standards which are covered in chapter 8, and then we will cover the other social audit standards also. इन्होंने क्या किया, 5 तो वहां पर कवर कर दिए और 2 यहाँ पर कवर कर दिए केस स्टडी. So let us read case study 1. So XYZ is a for-profit organization providing skill development training to youth in Bhopal. तो अल्टीमेटली आपको उतनी राम कहानी नहीं आनी, आपको कहानी इतनी आएगी, ये जो दे रखी है. So it is a for-profit organization providing skill development training to youth in Bhopal. So this was set up to provide opportunities. लेकिन हम क्या करेंगे, हम 16 के 16 केस जो ऑडिट स्टैंडर्ड्स है ना, कम से कम हर एक पर 2 केस स्टडी भी अगर हम बनाएं तो 32 केस स्टडी हमारी बन जाएगी. ठीक है. So KYZ is a for-profit organization providing skill development training to youth in Bhopal. This was set up to provide opportunities for skilling to the unemployed and underprivileged youth of Madhya Pradesh and provide skilled manpower to the various industries. So they are providing training in 20 different areas to create employment opportunities for the youth. A number of short-term courses are offered under the project like construction industry trades, plumbing, masonry, carpentry, welding, etc., housekeeping and hospitality, food and beverages, sewing machine operator, electrician, BPO voice calling, general duty assistant, etc. They have also developed network of industries to provide placement to these participants of the program. So they are saying that XYZ is a for-profit organization which is working in the field of skill development in MP. Now they are providing training in different areas and they have short-term courses and they have developed network of industries also. Okay. So till March 2022, they have trained 8,624 youth in Madhya Pradesh and the organization has spent 1.20 crore for this project. So this is the sample case study. Now, based on this, let us see what are the questions based on this. So which amongst the following could be the drawback of conducting social impact of this project through documenting case studies narrated by the participants? Now, अब ये क्या करने, they are working in the field of skill development. ठीक है. इन्होंने क्या किया, जो पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स है उनकी केस स्टडीज को डॉक्यूमेंट किया. जैसे एक मान लो प्लम्बर का कोई कोर्स कर रहा है, अब उससे पूछा कि भाई प्लम्बर का कोर्स करके तुम क्या करोगे, तुम्हारे को कैसा लग रहा है, सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे, आपको क्या लगता है कि ये सीखने के बाद तुम्हें कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, ये सब चीजें. तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हम ऐसा कोई केस स्टडीज को डॉक्यूमेंट करें तो उसके क्या ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं, ये दिस इज द क्वेश्चन. तो पहला, पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कैन बी कैप्चर्ड, ये तो ड्रॉबैक नहीं हो सकता है ना, ये तो एडवांटेज ही है. कवर्स ओनली अचीवमेंट ऑफ सोशल मिशन एट इंडिविजुअल स्टेक होल्डर लेवल. तो क्योंकि आप इंडिविजुअल से पूछ रहे हो तो इंडिविजुअल लेवल पे तो ये हो सकता है. जस्ट अ मिनट, एक मिनट. हेलो, हाँ जी भारद्वाज जी, हाँ जी. हाँ. सो पूछ रहे हैं कि भाई इफ यू डायरेक्टली इंटरव्यू द पार्टिसिपेंट्स एंड यू डॉक्यूमेंट दोस केस स्टडीज तो उसका क्या ड्रॉबैक हो सकता है. ठीक है. तो पहला तो ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है ना. दूसरा ये कि कवर्स ओनली अचीवमेंट ऑफ सोशल मिशन एट इंडिविजुअल स्टेक, ये हो सकता है कि भाई आप इंडिविजुअल से पूछ रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस ही आप कैप्चर कर पाओगे. तीसरा बोलता है लॉजिकल चेंज इन द सोशल इंपैक्ट कैन नॉट बी कैप्चर्ड, ये भी हो सकता है. एंड गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, तो ये भी कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, गैप्स तो हो ही सकते हैं ना. वही वो कहते हैं कुछ सिखाते नहीं है, ये तो थ्योरी सिखाते हैं. हमें प्लम्बिंग का एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, हमें कभी रंदा चलाना ही नहीं सिखाया या हमें टूटी खोलनी ही नहीं सिखाई, ये तो सिर्फ थ्योरी पढ़ा देते हैं कि जी टूटी ऐसे होती है, हमने हमारे सामने कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल करवाते नहीं. तो ये जो गैप्स है ये तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या पर्सनल एक्सपीरियंस कैप्चर कर सकते हो, ठीक है ना. लेकिन ये जो बी और सी है ये आपके इसमें ड्रॉबैक हो सकते हैं. अब अगर हम देखा जाए तो भाई हम इसको कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते थे, ठीक है ना. लेकिन ये कि अगर हम पढ़ लेंगे उस पॉइंट को तो और अच्छा रहेगा. तो पॉइंट ए तो एडवांटेज है, ड्रॉबैक नहीं है. पॉइंट डी भी जो रेलिवेंट है, ठीक है ना. एज के स्टडीज डू कवर गैप्स आइडेंटिफाइड बाय द बेनिफिशियरीज. तो आंसर इज बी एंड सी. अगला पॉइंट देखते हैं.
If XYZ integrates हमारा था पॉइंट नंबर 180 था ना। तो अगर ये XYZ इंटीग्रेट कर देगा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट्स प्रोसीजर, हमें पता है इंटेग्रल पार्ट ऑफ प्रोसीजर क्या होता है कि भाई हमने इनबिल्ट सिस्टम बना देना है। हमने जैसे जैसे वो मान लो काम कर रहे हैं, हम उन्हीं को क्वेश्चन दे देंगे, भाई तुम फिल करो क्वार्टरली लेवल पे, वीकली लेवल पे, इस तरह से हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर ये इसको इंटीग्रेट कर देगा तो क्यों, अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का मतलब पता होना चाहिए, बस इतना ही है। तो ऑर्गेनाइजेशन विल फेस विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंज, तो अगर इंटीग्रेशन कर देगा तो क्या चैलेंज आ सकता है, क्वेश्चन ये है। तो 3 इसमें दे रखे हैं, 3 में से हमें देखना है कि क्या होगा। इट विल रिक्वायर सेटिंग बेंचमार्क्स फॉर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। इट विल हैव ए मोर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग। इट विल नॉट हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज इंडिकेटर्स एज पर द सिचुएशन। तो ये हम पढ़ भी चुके हैं, मेरे हिसाब से सी इसका आंसर होना चाहिए। क्या बोलता है, वन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द इंडिकेटर्स और मेथोडोलॉजी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द फंडर्स और अदर स्टेक होल्डर्स। क्योंकि आपने फॉर्मेट सारे डिजाइन कर लिए, बना दिए, ठीक है ना। आप क्या करते हो, आप कहते हो जी मंडे को जैसे ही लॉग इन करेगा वो अपना फीडबैक देगा, या वीकेंड पे जैसे ही लॉग आउट करेगा उससे पहले अपना फीडबैक देगा। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इसका ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स चैलेंजेस इन कंडक्टिंग द सोशल ऑडिट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये जो सोशल ऑडिट इम्पैक्ट असेसमेंट आप कर रहे हो, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक चैलेंज है। ठीक है भाई, पहला अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट डेटा ऑन स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोस्ट कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, lack of interest among youth to continue the program, participants unable to get suitable jobs, quality of content covered in training program is of poor quality। तो ये कौन सा चैलेंज है। इसमें तो डी भी ठीक ही लग रहा है कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट, अगर कंटेंट नहीं होगा तो सोशल इम्पैक्ट होएगा ही नहीं। तो इसमें खाली इन्होंने आंसर तो अनअवेलेबिलिटी का दिया है। आंसर तो ए ही होना चाहिए वैसे। आंसर तो ए ही है, वही हाईलाइटेड है, पर हाँ, मतलब हाँ इसमें ऐसा है ना, वो है। क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट चैलेंजेस इन कंडक्टिंग सोशल इम्पैक्ट। आप सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हो, तो अगर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट आप करोगे तो आपको डेटा तो चाहिए ना। भाई आपने यहाँ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मध्य प्रदेश में शुरू करा, आप उसको सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए आपको जॉब दे दिया एज ए सोशल ऑडिटर, तो आपके पास डेटा तो होना चाहिए जिसके साथ आप मैच करोगे। अगर आपके पास एक्यूरेट डेटा ही नहीं है ऑन स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोस्ट कंप्लीशन, भाई अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपका तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, वो उनका प्रोग्राम कंप्लीट होगा, उसकी जॉब लगेगी, तो उसके बारे में तो डेटा नहीं है ना आपके पास। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट की बात कर रही थी, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा भी तो आता है। नहीं, वो कह रहा है कि चैलेंज क्या है, आप सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हो, तो ये चैलेंज क्या है। ये तो चैलेंज नहीं ना, ये तो फैक्ट हो गया कसम से, क्वालिटी ऑफ कंटेंट कवर्ड। हाँ ये तो फैक्ट है, यस, चैलेंज नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट इंडिकेटर while assessing impact of training program of XYZ। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट इंडिकेटर है while assessing impact of training program। मेरे हिसाब से भी होना चाहिए, एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ फैमिली मेंबर, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना भाई, एक तो ये है, ये तो अगर आपकी ट्रेनिंग बढ़िया होगी तो वो रेगुलरली अटेंड करेंगे, उनका एटीट्यूड भी बदलेगा, उनको लगेगा भाई हमारी जॉब लग जाएगी। लेकिन ये जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, ये तो इनकरेक्ट इंडिकेटर, बी ही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो इसका। हाँ जी, क्या आंसर है।
फोर्थ का बी ही है। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड से क्या मतलब उसका, है ना। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंस्ट्रेंट दैट रिस्ट्रिक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सा कंस्ट्रेंट ऐसा है जो जो इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। देखते हैं बी के बाद भी होगा कुछ इसमें। हाँ, सीबीएस में लैक ऑफ एनफ डेटा ऑन एलुमनाई मेंबर्स टू ट्रेस देयर एम्प्लॉयबिलिटी एंड इनकम स्टेटस। इम्पैक्ट इंडिकेटर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ये कहता है इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल गेट अफेक्टेड बाय डिमांड एंड सप्लाई इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। रेस्ट कंस्ट्रेंट्स आर रिलेटेड टू चैलेंजेस इन कंडक्टिंग सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। बाकी जो है वो चैलेंजेस हैं सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए, लेकिन ये वाला जो है ये क्या कह रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल गेट अफेक्टेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंस्ट्रेंट दैट रिस्ट्रिक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई आपने ट्रेनिंग भी बढ़िया कर ली, ठीक है ना, आपने सब बढ़िया कर लिया, लेकिन फिर भी वो इफेक्टिव नहीं है, उसका इम्पैक्ट नहीं आया जो आना था। वो डिपेंड करेगा जो डिमांड है, डिमांड फॉर स्पेसिफिक स्किल सेट्स इन द मार्केट एंड सप्लाई ऑफ ट्रेन्ड मेंबर्स अंडर दिस प्रोजेक्ट। अगर ये मैच नहीं कर रहे, ठीक है, तो उस केस में ये जो है इसका इम्पैक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। आपने सिखा दिया, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, पहले से ही बहुत है। अगला भी कर ही लेते हैं। अब क्या है, 10 मिनट और लगेंगे, क्यों जी, दो ही तो प्रोजेक्ट है, तो इसको खत्म करेंगे ना, फिर खत्म करके फिर ये है कि इसके बाद हम सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे। केस 2 स्माइल्स प्रोजेक्ट was launched by an NPO in rural Karnataka, which aims to spread awareness among children about correct oral habits, basic hygiene and diet to reduce the prevalence of dental caries. So children between the age group of 6 to 14 years studying in primary schools are taught good oral hygiene habits, the right technique of brushing with the use of a tooth model and a toothbrush. The significance of brushing at night through an interactive module where the importance of a good mouth cleaning regimen is strongly instilled in them. At the end of the program, each child is given a dental gift box consisting of a toothpaste and a basic toothbrush, along with attractive charts depicting valuable oral care information in order to encourage the children to brush twice a day and take care of their oral care hygiene. The project has impacted 67,238 चिल्ड्रन। तो उनको क्या किया, बाद में डेंटल गिफ्ट बॉक्स दिया, टूथपेस्ट था, टूथब्रश था और अट्रैक्टिव चार्ट्स थे जिसमें ओरल केयर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बच्चों का एज ग्रुप क्या है, 6 से 14 साल। So which of the social impact approach is difficult to use for this project considering the target population and type of activity? ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन आपकी क्या है, बच्चे हैं। बच्चों में जो डेंटल केरीज वाली प्रॉब्लम होती है उसको आपको रोकना है। तो इनमें से कौन सी अप्रोच डिफिकल्ट हो सकती है बच्चों के लिए, ठीक है, तो मोनेटाइजेशन अप्रोच डिफिकल्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो मॉनिटरी इम्पैक्ट ऑन ओरल केयर कैनॉट बी सीन एट सच अ यंग एज। Change in oral care habits can be captured while using the other three approaches. Dental issues normally arise at a later age, hence monetary approach in terms of expenses incurred for dental treatment cannot be covered. ठीक है भाई, हम कहेंगे तुम्हारा इतना खर्चा हो जाएगा अगर डेंटल ट्रीटमेंट पे, तो ये वाली अप्रोच नहीं चल पाएगी, ठीक है। Which of the following data collection methods would be difficult to use for primary beneficiary of the project? क्या मुश्किल होगा आपका, ये जो क्वेश्चन एयर बना, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चे उनके लिए मुश्किल होगा। आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज भी ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन एयर उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि प्राइमरी बेनिफिशियरीज आपके चिल्ड्रन, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, which of the following aspects can be excluded by the social auditor while deciding sample for data collection? तो कौन से एस्पेक्ट्स को आप एक्सक्लूड कर सकते हो? डेंटल इश्यूज फेस्ड बाय द चिल्ड्रन before implementation, health records maintained by the schools, changes in the sale of dental products, and expressiveness of children in answering data collection tools.
तो इसमें आंसर दिया है चेंज इन सेल ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स. So changes in sale of dental products could be an impact indicator if the sales data is taken into consideration. So it is not an indicator to select a sample for data collection. वो कह रहा है कि हम डेटा अगर कलेक्शन के लिए सैंपल उठाएं तो सैंपल के लिए किस चीज को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि ये इम्पैक्ट इंडिकेटर हो सकता है अगर हम ये सेल डेटा को लें. तो इट इज नॉट एन इंडिकेटर टू सेलेक्ट सैंपल फॉर डेटा कलेक्शन. ठीक है, तो डेटा कलेक्शन के लिए हमारे को सैंपल यहां से उठा सकते हैं बाकी से. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग SIA फॉर स्माइल. इसमें क्या होगा, हर एक में आप लोग केस स्टडी देंगे और वो 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, एक ही केस स्टडी. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग SIA फॉर स्माइल. क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? टू प्रिवेंट चाइल्डहुड डिके, to understand reduction in oral health issues among the children, to help prevent bad breath, tooth decay and gum disease, all of them. क्या हो सकता है इसमें? ये कहता है आंसर इज बी, as it can be an objective to assess impact. ये कहता है अगर हम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो हम we want to understand the reduction in oral health issues amongst the children. अगला देखते हैं, कंडक्टिंग सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ स्माइल प्रोजेक्ट वुड हेल्प पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन इन फॉलोइंग वेज. किस तरह से हेल्प करेगा? टू पब्लिसाइज द एफर्ट्स ऑफ द स्माइल टीम, टू मॉनिटर चेंज इन ओरल केयर हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन, टू ब्रिंग इन रिक्वायर्ड चेंजेस इन द स्माइल प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, टू मोटिवेट स्कूल रिप्रेजेंटेटिव चिल्ड्रन एंड अदर पेरेंट्स टू इम्प्लीमेंट सिमिलर प्रोजेक्ट्स. तो इसमें बी और डी है. Answer is B and D, as parents can observe the changes in habits of children and can coordinate with other parents in school to monitor similar projects. Option A और C जो है ये benefit है for management of the organization. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को रीफ्रेम करके 5 क्वेश्चन तो इसके अंदर से ही और बन जाएंगे. ठीक है ना. सो इसमें ये देगा कि भाई व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो उस तरह से हम उसको रीफ्रेम भी कर सकते हैं इसमें जो आंसर दिया हुआ एक्सप्लेनेशन है. तो हमें क्वेश्चन आंसर करते टाइम ये भी देखना है कि क्या वो इम्पैक्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इस तरह से. तो नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट विद सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स. हमने थोड़ा थोड़ा केस स्टडीज को देख लिया कि ये अब हम हर एक स्टैंडर्ड पकड़ेंगे. पहले ये वाले 5 स्टैंडर्ड पकड़ेंगे जो चैप्टर 8 में दे रखे हैं, उसके बाद में बाकी के 11 भी करेंगे. तो पहले 5 स्टैंडर्ड पर हम क्या करेंगे, 10 केस स्टडी बनाएंगे. ठीक है ना. 2-2 केस स्टडी पहले बनाते हैं, फिर बाकियों पर भी बनाते हैं. कोई वो तो किसी के ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि इन्होंने जो 5 सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड दिए, केस स्टडी उन पर नहीं बनाई, केस स्टडी दूसरों पर बनाई. तो एक किस्म से इनडायरेक्टली इन्होंने 7 सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड कवर कर लिए. तो इसको आज की कथा यही समाप्त करते हैं.